अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू सां गॾु मां आहियां वाजो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, ग्लोबल रिव्यू में पाण आलमी वाक़िअनि, आलमी सियासत ऐं आलमी हादसनि जे हवाले सां डिस्कस कंदा आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं त आलमी दुनिया ते उभरंदड़ अहम वाक़िअनि खे डिस्कस कयो वञे ऐं उन्हनि जे अहम तह ताईं पहुचण जी कोशिशि कई वञे। ऐं कोशिशि इहा बि हूंदी आहे त जेके ख़बरूं असां ताईं पहुचंदियूं आहिनि उन ख़बर जे पुठियां जी ख़बर जेका हूंदी आहे उन खे बि जांच कजे, उन जी बि जेका आहे मालूमात हासिल कजे। इन हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे अॻूणा सफ़ीर आहिनि साईं रफ़ी ज़मान सिद्दीक़ी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। रफ़ी ज़मान साहब, वॾी महिरबानी वक़्तु ॾियण जे लाइ। सभ खां पहिरियां इहो ॿुधाइजो त रूस जहिड़ो अहम मुल्क यूक्रेन ख़िलाफ़ जंग में आहे, छा अव्हां सम्झो था त इहा जंग जेका आहे हिते ख़तमु थी सघे थी या इहा जंग जेका आहे टी आलमी जंग न बि थिए त यूरोप खे पंहिंजे जेको आहे इनिसार में आणे वठे? Thank you, Ishfaq, for having me. मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में वठण जो ही मसलो जेको हले पियो हाणे हफ़्ते खां वधीक थी वियो आहे त वॉर जेका हले पई रूस ऐं यूक्रेन मां त मां सम्झां थो त ही अलाह करे ही वर्ल्ड वॉर न को इंशाल्लाह कोन कन्वर्ट थींदी, पर देयर इज़ अ लाइकलीहुड ऑफ इट्स एक्सपेंशन इनटू यूरोप। छाकाणि त मां सम्झां थो त जीअं अमेरिका एंड वेस्ट एंड ईयू जेका बि कंट्री आहिनि हिननि जो बि हिकिड़ो रोल आहे। आई थिंक Putin has been pushed into it. छाकाणि त यूक्रेन जेको हो that was supposed to be a neutral country, and unfortunately since जेका 99 जॾहिं NATO and ॿियनि countries they started other Soviet Union countries, East European countries into NATO, that alarmed Putin. छाकाणि त यूक्रेन जेको आहे that is the immediate neighbor which has always remained a part of the Soviet Union for almost 500 years, and it was only like 26 years जेका आहिनि हू यूक्रेन जेको आहे इंडिपेंडेंस वरी अथसि। पर हुन जो जेको मसलो हाणे जेको थिए पियो त जॾहिं हू हुननि खे जेको प्रेसिडेंट आहे हुन जो प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन जो ज़ेलेंस्की जेको हुनजो नालो बि डिफिकल्ट हूंदा आहिनि, प्रोनाउंस करण बि मुश्किल थींदो आहे इन्हनि रशियन नेम्स खे, त ही हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट इनटू NATO, and West has been trying to take them into NATO. इन्हीअ जे करे जेको यूक्रेन जेकी आहे उहा रेड लाइन आहे प्यूटन जे लाइ, and it was agreed between in 99 and अॻिते बि 2014 में जॾहिं यूक्रेन क्राइमिया के कैप्चर कयो, देखो क्राइमिया भी हुनजो पार्ट हो। दैट वाज वेरी क्रिटिकल स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। क्राइमिया भी हिकिड़ो वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री होने जे करे त these problems erupted जॾहिं West and EU and NATO they wanted to take Ukraine into their fold, which of course is not absolutely agreeable to Putin. In जे करे he they had to go in and they had to start a war against Ukraine. Rafi Zaman, do you think that the imposing the sanction over the Russia is the solution of this all war situation? Ishfaq, मां सम्झो त sanctions जेको impact त थींदो, but Russia is a big power itself, and it has amassed, accumulated more than $600 billion in its reserves, and हुन जी जेका leverage आहे हुन जी energy जे लाइ, and छाकाणि त जेको बि यूरोप जेको आहे जॾहिं Nord Stream 2 since it was established in 2021 last year, हुननि जे लाइ बि हिकिड़ी डिफिकल्टी आहे। हिन जो कुझु इम्पैक्ट तो थींदो, पर मां सम्झां थो त रशिया इज स्टिल एबल टू काइंड ऑफ एनकाउंटर इट। रफ़ी ज़मान साहब, इहो ॿुधाइजो त छा इहे पाबंदियूं सिर्फ़ रशिया खे नुक़सान ॾींदियूं, या छो त रशिया जो जेको तिजारती नेटवर्क आहे उहो पूरे यूरोप जे काफ़ी मुल्कनि ताईं बि फैलियल आहे, त इहा जंग जेका आहे शुरूआत त हथियारनि जी थी आहे, पर छा इन जो एंड वञी मुआशी जंग ते ख़तमु न थींदो? हिन जो इम्पैक्ट डेफिनेटली रशिया ते थींदो ऐं हिन जो इम्पैक्ट यूरोप ते बि थींदो, छाकाणि त दे आर ऑल्सो गोइंग टू सफर। लार्ज 40% ऑफ एनर्जी जेका ईंदी आहे उहो रशियंस सप्लाई कंदा आहिनि, पोइ हुन जो इट इज़ लाइक अ क्विड प्रो काइंड ऑफ अ थिंग। त मां सम्झां थो त हिन जो इम्पैक्ट ॿिन्हिनि कंट्री ते, बट मोर इम्पोर्टेंट इट इज़ इम्पैक्टिंग ह्यूमन्स। इलाही माण्हू जेका आहिनि सफ़र था कनि, स्पेशली यूक्रेनियन वारा जेका आहिनि। मां सम्झां थो त हिन टाइम ते ॿिन्हिनि कंट्री खे, आई मीन all the stakeholders, whether it is US, EU, NATO, G7 वारा जेका आहिनि, सभिनी खे हिते विहण पाण, they have to sort out a strategy to get
this situation out, to get out of this situation. And मां समझा तो हिन में UN जो भी हिकिड़ो रोल आहे. UN जे क्या ख़बर आहे पता Security Council जी भी मीटिंग थी अथसि ऐं इलाही मुल्कनि, more than 141 countries have supported the US resolution, but it's sagi tarah there are 35 countries who have kind of not supported and many have abstained. In Pakistan asanjo bhi aaye, Asia mein jeka region आहे, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, except for Nepal, I think they have all abstained. So asan bhi जेको असांजो पाकिस्तान जो जेको stand आहे न ते we want to have a negotiated and diplomatic solution, but we are also facing pressure. It is coming on to us also from from the Europe, from Europe, from America. Even yesterday, United States has said that they have raised the issue with Pakistan. And हमारे खबर हुई the EU जो जेका ambassadors आए Islamabad में, they had written a letter which was also came into public, which I think has been objected by our foreign office. The diplomacy जेका है, this is not good. This should have been done discreetly rather than coming out openly about it. Sir, kindly inform us that what kind of threats might be from the from Ukraine to Russia, that Russia started the war against the Ukraine, because Russia is a big country and who is hold the nuclear weapons as well. तो अवां समझो था त रशिया एडो वडो मुल्क थी करे यूक्रेन जड़े मुल्क सां आम गाल जका है उन ते जंग करे वेठो आहे या गालिन सां मसलो भी त हल थी पे सकियो. Basically तो हुजण ये खपे हा त negotiations and diplomacy should have worked. But छाकाणि त जीअं मां अॻु में चयुमि त Ukraine was a red line. Russians would never accept Ukraine to be a member of NATO. And India je kare, it was pushed into मां समझां थो त Putin has been pushed into it. There was an agreement much earlier that between the United States and NATO that they would, when they kind of included like countries like many Eastern European bloc that became part of NATO, it had alarmed the Russians. So that is an impact. The impact would be more on Ukraine than on Russia, because it is the Ukrainians who are suffering more. But Putin is facing problems from within Russia also. There is a large number of people in Russia. Russians are kind of, they have come out on the streets also to oppose the war. Somebody the best solution that is of course in diplomacy and negotiations and talks. This time the war will keep on going, and it is going to impact more on Russia, more on Ukraine. About more than 1 million people have moved out of Ukraine. They have gone to Eastern Europe. They have gone to so many other countries where they are pitching their tents. But it will only be resolved only through talks. But Putin is not going to come around unless and until the purpose of attacking, according to Russians, is that they want to de-weaponize Ukraine. They don't want to have war with Ukraine as such, but they want to de-weaponize, and they want to make sure that the leadership Ukraine, they should accept that because of the Ukraine strategic location that is very, very critical. They don't want, Russians don't want that nuclear weapons should come to their border. So रफ़ी ज़मान साहब इहो बि ॿुधाइजो त छा रूस जेका या जंग छेड़ी आहे यूक्रेन सां, इन खां पोइ जेके आज़ाद रियासतूं आहिनि जेके कंहिं ताक़तवर जे पाड़ेसरी मुल्क जे हुजण जे नाते उन्हनि में इहो ख़ौफ़ जी सूरत हाल पैदा न थी वई आहे त अहिड़ियूं ताक़तवर रियासतूं जेॾीमहिल बि चाहिनि हिकु आज़ाद ऐं कमज़ोर रियासत ते कब्ज़ो करे सघनि थियूं, उन ते हमिलो करे सघनि थियूं. इन सां दुनिया में हिकु अनरेस्ट वारी कैफ़ियत जेका आहे उहा वधी आहे. छा इन जा नुक़सान पूरी दुनिया में न थींदा मुस्तक़बिल में? बिल्कुल थींदा इशफाक. ये जेका सिचुएशन अराइज थी आहे हुननि जे रिपरकशंस will not remain restricted to Europe, but it will have a snowball effect and mass effect in entire world थींदा. पर immediate जेको effect थींदो हुन ते यूरोप ते थींदो. पर असां जी जेका बि मुल्क हिन में स्टेक होल्डर्स आहिनि, हुन इन्वॉल्व आहिनि, हाणे हुन जो मास हुन जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे that they should get together and try and resolve this issue with Russia. Russia and Ukraine have already engaged in a dialogue about how to deal with the humanitarian aspect of the crisis. There's other, large number of Ukrainians. More than 1 million people have been displaced.
and internal displacement bhi thiya awan ki khabar ata Kiev jeko capital a hona te constantly attacks thiyan pya ine je kare jeko second big city a Kharif hona te bhi thiyan pya Mariupol and jeka bhi badi cities are they are facing the problem and ine je kare manu jeka ain especially young people old women children they are all facing the problem jane bombardment thindo ata hu metro stations jeka hote halya vinda ain and jeka bhi they move into these stations and they move into these safer places bas I want to quickly be gal jeka ma yesterday it was yesterday I think or day before the day who nuclear plant te bhi hote so unka to attack थियो but खुदा जो शुक्र आहे त कुछ कोन थियो that has been confirmed but हाणे हे फिक्र बि हूंदी हिकिड़ी हे बि त आहे न छाकाणि त Russia is a nuclear power and उन्हनि वटि बि आहिनि nuclear त ही मां सम्झो थो त कॾहिं रिस्ट्रेंट करे सघे मुंहिंजो ख़्याल आहे मां सम्झां अच्छा रफ़ी ज़मान साहब इहो ॿुधाइजो त पाकिस्तानी स्टूडेंट जेके आहिनि उहे बि काफ़ी तादाद में यूक्रेन में आहिनि जेकॾहिं अव्हां उन वक़्तु हिन वक़्तु जेको आहे उते सफ़ीर हुजो हा त अव्हां जी जेका आहे हिकमत अमली छा हुजे हा उन्हनि खे बचाइण जे लाइ ऐं उन्हनि जूं शिकायतूं बि काफ़ी अचनि पियूं अव्हां छा था सम्झो त जेके पाकिस्तानी सफ़ीर आहिनि या पाकिस्तानी अमलदार आहिनि उहे कहिड़ी तरह या कहिड़े पासे खां जेके आहिनि कोताही पिया था कनि मां सम्झां थो अशफाक़ कोताही कोन थी दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली not right मुझे ख्याल में तो जॾहिं भी ये मसलो थींदो आहे it is not only Pakistanis everybody suffers and जॾहिं असां जी जेका मिशन आहे हुतां हुतां मूव कनि इवन एम्बेसी वारा जेका आहिनि असां जे लाइ बि तमामु ॾुखियो थी वेंदो आहे चवणो त तमामु सवलो अथसि त एम्बेसी वारा कुझु कोन कनि पर जॾहिं बि ईअं थींदा आहिनि मसला थींदा आहिनि त a large number of Pakistanis students have already been evacuated our ambassador and असां जा जेका स्टाफ वारा आहिनि असां जा जेका ऑफिस आहिनि they are engaged 24/7 मां सम्झां थो त हिकिड़ी ही ॻाल्हि छाकाणि त मां पाण बि एम्बेसडर जॾहिं हुयुमि that I was in Paris and I was in Kenya and Dhaka जॾहिं बि असांजा इहे प्रॉब्लम्स थींदा आहिनि त अनफॉर्चुनेटली असांखे मीडिया सां सपोर्ट कोन मिलंदी आहे असां आई मीन इट इज़ ऑलवेज द मिशन्स आर ऑलवेज टारगेटेड चवंदा आहिनि त मिशन पंहिंजो कमु कोन कनि पर ही ॻाल्हि मां सम्झां थो त दिस इज़ एन एग्ज़िजरेशन असांजो एम्बेसडर हुते वेठो आहे असांजी एम्बेसी हुते आहे they have moved out of from here जॾहिं जंग जी सूरत हाल थींदी आहे त अशफाक़ हिकिड़ो मिशन बि कुझु कोन करे सघे थो छाकाणि त हुते गवर्नमेंट त काहे कोन कंहिंसां हाणे माण्हू ॻाल्हाए सॼो इहो मसइलो इहो थी वेंदो आहे त लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट in any case have been evacuated to different countries a quite number of them have already arrived in Pakistan पर ही जेका ॻाल्हि आहे न त मिशन वारा कोन कमु कंदा आहिनि मां आई एम नॉट सेइंग छाकाणि त मां हुनजो पार्ट हुयुमि त मां एम्बेसडर आहियां मुंहिंजो फॉरेन सर्विस जो तालुक़ु आहे पर मां सम्झो त असां कॾहिं बि ईअं कोन कंदा आहियूं तव्हांखे मां हिकिड़ो just to remind you that जॾहिं लेबनॉन मां about more than 15 years this issue cropped up जॾहिं पाकिस्तानीज़ हुते they got entangled there असांजी लेडी सफ़ीर she was the last one to leave Beirut she made ensure that each and every Pakistani even her staff when was left the Beirut only then she moved out of Beirut असांजो इहो मसलो आहे त unfortunately media hype create की थींदी आहे त माण्हू they come and they have complaints I don't say that they are not wrong they have complaints and of course they will look up to the mission and it is the mission's responsibility to ensure their safety and security पर मां सम्झां थो त असां कॾहिं बि हिन में कोताही कोन कंदा आहियूं रफ़ी ज़मान सिद्दीकी साहब वॾी महिरबानी अव्हां जी वक़्तु ॾियण जे लाइ नाज़रीन सीनियर जेके आहिनि अॻूणा सफ़ीर आहिनि रफ़ी ज़मान सिद्दीकी साहब पाण यूक्रेन ऐं जेका रशिया जी जंग आहे उन हवाले सां पंहिंजो जेको तजियो पंहिंजो जेको एक्सपीरियंस आहे साहा जेको आहे सफ़ीर रहंदड़ तौर ते त अहिड़ी सूरत हाल में छा करणु घुरिजे ऐं कीअं जेको आहे सूरत हाल खे ॾिसणु घुरिजे ऐं मामला जेके आहिनि जंग जे बजाए उहे सफ़ारतकारी जे ज़रिए हल कया वञनि त जीअं मसइलनि खे जेको आहे आसान तरीक़े सां हल कयो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु इंसानी क़ीमती जानियूं जेके आहिनि उन्हनि खे बि बचायो वञे छो त जंग में सवाइ नुक़सान जे ॿियो कुझु बि हासिलु न थींदो आहे आख़िरकार जंग खां पोइ बि ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते अचिणो पवंदो आहे ऐं मसइला ॻाल्हियुनि जी मेज़ ते हल करणा पवंदा आहिनि त इन खां बहितर आहे त वक़्तु गुज़री वञे ऐं नुक़सान हद खां वधीक थी वञे त ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते अचणु खपे ॿिन्ही मुल्कनि खे ऐं आलमी जेके अॻुवान आहिनि उन्हनि खे अॻिते वधी करे ॻाल्हि खे जेको आहे कंट्रोल करणु घुरिजे त जीअं मसइला बहितर तरीक़े सां हल थी सघनि प्रोग्राम जारी आहे ते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो हाज़िर थियूं था ब्रेक खां पोइ